sponsorships, please contact climate@ideasfirst.com. Thank you and hope to see you there. Sponsorships, please contact climate@ideasfirst.com. Thank you and hope to see you there. Global Hub Director of Future Earth, based at our global hub in Stockholm, Sweden. We're a global research network on sustainability science. This report was produced by Future Earth in collaboration with please Earth contact League climate@ideasfirst.com. Climate Research Program. Thank you. I'll be your host for today, and I'll moderate this session. We're really happy that you've joined us today to hear from the report's authors. We have 3 of the report's authors online. We have one of the editorial board members, Johan Rockström, here on stage. Hope we have not forgotten the flash floods, tsunamis, cyclones, earthquakes, and heat waves. And no amount of money or high-level connections can save us from these disasters. Individual and isolated efforts will not help. We need to collaborate and work together. Hello and welcome to the India Climate Conference 2022, brought to you by Ideazfirst. I am Rajesh Kishanpuria, founder and CEO of Ideazfirst Group. Pollution and abuse of natural resources at all levels is the key cause of climate change. Whether it is sound pollution, air pollution, fire pollution, water pollution, or soil pollution. The India Climate Conference is a unique platform to connect and collaborate the 5 stakeholders and the 5 elements: the government bodies, the industry bodies, the NGOs, press and media, and the Aam Janta. Everybody needs to collaborate strategically to achieve faster results. In this conference, we will try and find out solutions that are cost-effective and easy to implement. How can we reduce corporate commuting costs and the total number of cars in the city roads? For example, what can Uber and Ola do to reduce air pollution? And how can IT industry help in creating awareness about climate and make people accountable for? Can we create computers and servers which do not require air conditioning? How can educational institutes collaborate with government bodies and NGOs to offer climate awareness programs for the masses and the next gen? What can air conditioning companies do to reduce global warming? How can celebrities and their fans connect together to combat climate change? And we have fun environment quiz to check your climate quotient, Kaun Banega Climate Pati, and the awards for the best NGOs working for the environment. Let's discuss all of this. More details are at
climate.ideasfirst.com. Register yourself online on events.ideasfirst.in/climate. To showcase your climate, CSR and sponsorships, please contact climate@ideasfirst.com. Thank you and hope to see you there. Hope we have not forgotten the flash floods, tsunamis, cyclones, earthquakes, and heat waves. And no amount of money or high-level connections can save us from these disasters. Individual and isolated efforts will not help. We need to collaborate and work together. Hello and welcome to the India Climate Conference 2022, brought to you by Ideazfirst. I am Rajesh Kishanpuria, founder and CEO of Ideazfirst Group. Pollution and abuse of natural resources at all levels is the key cause of climate change. Whether it is sound pollution, air pollution, fire pollution, water pollution, or soil pollution. The India Climate Conference is a unique platform to connect and collaborate the 5 stakeholders and the 5 elements. The government bodies, Hello. Welcome back. We are having a wonderful session on the Indian Climate Conference today. This is an initiative of Ideazfirst Group. In the morning, we had a wonderful session where we had Mr. Sanjoy Chatterjee, chairman of NASSCOM. He had given a wonderful description and insight of the climate today. And apart from him, we had Mr. Nirupam Chaudhuri, regional director, NASSCOM. And we have also heard Apurba Mitra from KPMG. Now we are having another NGO. They are doing a wonderful work towards climate preservation. They are basically into soil restoration and tree plantation. They have done a wonderful work on sustainable integrated rural development. I would request here
Miss Archana Agarwal, she's here with us today from Samriddhi Foundation. I would request her to come on stage, ma'am. Please come. And you please give an insight over your work, what you have done the last 2 years, and what you are planning to do in future also. You're planning, please share with us, ma'am. Thank you. Thank you. First of all, I would like to congratulate Ideazfirst for their. First of all, I would like to congratulate Ideazfirst for organizing such a wonderful event and bringing all the stakeholders together. I understand that there are a lot of students who are seeing this program online. People from the industry are there, NGOs are there. So it's a wonderful occasion for me to share what we have been doing in this field in our little small way. To tell you about Samriddhi Foundation, basically it is working for sustainable integrated rural development. So each word is important here. We believe in sustainable living, balancing the 5 Js of nature. The 5 Js are Jameen, Jungle, Jan, Janwar and Jal. So Jal, Jameen, Jungle, Janwar and Jan. The Jan comes last because we are the one who have been exploiting all the other 4 Js. So it's high time now we prioritize that and give a little less priority to ourselves. Can we have the next slide, please? So our organization has been working in 6 districts of rural Bengal, where we find that the farmers are largely small farmers or marginal farmers, and there is widespread poverty and malnutrition there. There is excessive use of chemicals, which is not only typical to Bengal, but throughout the country and throughout the world. We have been exploiting our Jameen, the soil, so much that it is, ruined our soil condition and polluted the water condition also. As a result, what has happened is farming is no more profitable now. And because of this small land holdings, which is typical of Bengal, farmers are leaving farming. Farmers are moving away, running to cities for their livelihood. So what is the solution to this problem? Can we go to the next slide, please? The solution is to look at to resolve these problems that are there. So how is it possible? We have to increase the farmers' income and improve the nourishment of the villagers. And how is it possible? By better utilization of the natural resources, which I just mentioned: Jal, Jameen, Jan, Jungle, and Janwar. So our approach is a comprehensive approach, taking care of all the 5 resources that we are talking about. Can we go to the next slide, please? So what are we doing? How are we doing this? Basically, our initiatives are concentrating on providing training on zero-cost farming. Now, this is also, the government of India has also acknowledged, the Prime Minister has also acknowledged the need of the zero-cost natural farming, which we have started about in December 2016. We started as on a small scale as a pilot run, and then from December 2019 we've been doing this at a larger level in various 6 districts of West Bengal. So so this is first is the zero cost natural farming. Second is shifting from traditional crop, that is typically in Bengal it is paddy, to high value crop or farm crops. Third is rainwater harvesting ponds to enhance the productivity of these farmlands.
And fourth is biogas plants for green and renewable energy. And then to put everything together to the maximum utilization is better marketing through farmers produce companies and self-help groups. Next, please. So if we look at, no, the previous one, Yeah, this one. So when we talk about farmers training, what are we doing? We are teaching the farmers to make natural fertilizers, insecticides, and pesticides by using what? Basically, gobar, gomutra, and other natural resources which is easily available around them, like neem, like garlic, like gur, things which are easily available. So the cost of farming really substantially comes down for the farmer because these are the things which are easily and at a low cost available to him locally. And if we look at the other side of it, it is a big boon for the soil. It's really saving the soil. We know the condition, the excessive use of insecticides and pesticides and chemicals that has ruined our soil for over the last maybe 50, 60 years. Apart from that, we are also teaching the villagers how to make things which they are using in their daily lives. So their dependence on the city, it comes down substantially and they are living a more sustainable life. So what are the things that we teach them how to make are like soap, gonile, tooth powder, face wash, dhoop, diyas, these are the things which they are making themselves from the natural resources that are available. Next is the rainwater harvesting ponds. Next slide, please. For better yield and additional crop, fishing and fish farming and water for animal and birds, we are encouraging the farmers to make these small type of ponds in their farmlands itself. So what happens is that additional rain, which is actually washing the topsoil and also flowing down, it is collected and then this water is utilized. And additionally, the groundwater is getting recharged. Next, please. A gobar gas plant or biogas plant, as we can call it. This is providing smoke-free fuel and it protects the forest from deforestation. And 4 to 5 non-milking cows are getting permanent shelter due to each of these biogas plants which are being put up. And the best part is that the slurry, which is a byproduct of the biogas plant, it is an excellent quality of natural fertilizer, which the farmers are using in their farms. Next, please. Next is this topic which is very close to my heart. Fruit tree plantation can increase the farmer's income by 10 times at least as compared to, say, a typical paddy cultivation. It is a boon for the environment. It reduces the soil erosion, attracts biodiversity, and the groundwater level is also getting recharged. I'll just tell you one experience that, we got one of the BDOs, we were having a discussion with them and they said that, what are you people doing in the villages? Because we find that there are a lot of butterflies and insects which were not visible. They are coming back. So it was a big boost for us also that, the impact on the biodiversity is already starting. This is our team. We have a good support team which is there, and we have technical experts from various institutes like IIT Kharagpur, Vedant Chandra Krishi Vishwavidyalaya, Ghosh Vigyan Anusandhan Kendra Devlapal, and all professors and eminent people from these organizations are supporting us and guiding us from time to time. Our journey so far, in the last 3 years, we have been able to cover 575 villages. We have impacted lives of 7,350 farmers, 2.5 lakh
fruit tree plantation has already been done, and the zero cost natural farming training has been received by more than 2,000 farmers. 95 gobar grass plants have already been installed, and 600 plus rainwater harvesting ponds have been created. Our next target is, we want to cover 25,000 farmers in the training of zero cost natural farming. 1,000 biogas plants installation is planned. 1,000 ponds, farm ponds are being made, and we have a plan of planting 20 lakh fruit trees in various districts of West Bengal. And this is not the end. I hope this is the beginning, because in West Bengal itself, there are 40,000 villages and there are 72 lakh farmer families. So there is a huge scope for the work, and organizations like this, I think like-minded organizations also can get together and we can work together towards this. That's it. Thank you. Thank you, ma'am. I had a privilege of joining a lot of your tree plantation activities with your team in last 3 years, and we thoroughly enjoyed it. I went to Kharagpur with your team in the bus. We went to this various other places. I personally planted a lot of trees, and it was fun being a part of your team. It was like very interesting. Thank you. Thank you for the great work. Gram Samriddhi Foundation and Ms. Archana Agarwal and her team is doing an immense work for the rural development, and that too a sustainable one. More than half of the population is living in rural India. So their work towards rural development, and that too a sustainable one, is really commendable one. And we congratulate her and wish her a very good future. Thank you, ma'am. There's a small felicitation for your organization. Please be with there for some time. Or we can have the felicitation after some time. Nalini ji is there on line. I think we will listen to her and then we will do the felicitation. Nalini ji. नलिनी जी आप बोलिए आप। हाँ जी नमस्ते। नमस्ते। आज का जो विषय है क्लाइमेट चेंज, तो सही में आज की परिस्थितियां ऐसी होती जा रही हैं, जैसे अभी इस वर्ष की जो गर्मी पड़ी हमारे क्षेत्र में, वो इतनी भयंकर थी कि इसके पहले ऐसी गर्मी कभी अनुभव नहीं की। सभी चीजों में जो धीरे धीरे परिवर्तन आ रहा है, ये धीरे धीरे परिवर्तन हमें कहीं विनाश की ओर ले जा रहा है, ऐसा महसूस होता है। और ये कहीं तो भी हमको इसको रोकना पड़ेगा, हमको इसके अनुकूल होना पड़ेगा, कहीं तो भी यहाँ नियंत्रण की आवश्यकता है। ये सब जगह आज चिंतन का विषय हो रहा है। 5 जून हम पर्यावरण दिवस के रूप में पूरे दुनिया भर में मनाते हैं, पर इसको हमें रोज के अपने व्यवहार में, पर्यावरण को अपने सारे व्यवहार में, पर्यावरण को याद रख करके व्यवहार करने की आवश्यकता पैदा हो गई है। ऐसी वर्तमान परिस्थिति है। तो अभी जो परिस्थिति है उसको कंट्रोल करने के लिए बहुत सारी विधाएं हैं। हम बहुत सारी विधाओं पर प्रयत्न कर रहे हैं, प्रयत्न हमारे हो रहे हैं पेड़ों को लगाने के, वनस्पति जगत को घना करने का, और बहुत और भी क्षेत्रों में हम ये प्रयास कर रहे हैं कि प्रदूषण कम से कम हो, या बहुत सारी चीजें रिसाइकिल की जाएं जो कि
पर्यावरण में फिर से घुलती मिलती नहीं है। इन सब के प्रयास तो हमारे हो रहे हैं, पर एक प्रयास जिस पर मैं अभी जिस विषय पर बोलूंगी वो प्रयास है बहुत प्राचीन, जो वेदों में बताया गया है। वेद हमें ज्ञात सबसे प्राचीन विज्ञान है, सबसे प्राचीन ग्रंथ है। इसमें पर्यावरण को सुरक्षित और संतुलित और शुद्ध बनाए रखने का तरीका बताया गया है। क्योंकि वेदों में सब विषय पे ज्ञान है, तो पर्यावरण को कैसे हम स्वस्थ और हमारे अनुकूल बनाएं, इस विषय पर बहुत अच्छा ज्ञान हमें दिया गया है। तो मेरा विषय वो है कि ये जो ऊर्जा का संतुलन बिगड़ा हुआ है और ऊर्जा का संतुलन बिगड़ने की वजह से हम चारों तरफ विपरीत परिस्थितियां देख रहे हैं, इस ऊर्जा को संतुलित कैसे किया जाए। तो वेदों में जो बताया है वह यज्ञ बताए गए हैं इस सारे पर्यावरणीय असंतुलन को व्यवस्थित करने के लिए। बहुत सारे यज्ञ बताए हैं, उसमें एक यज्ञ है जिसका नाम अग्निहोत्र है, जिसके विषय में मैं बात करूंगी। क्योंकि बाकी के जो सारे यज्ञ हैं वो सब समूहों में होते हैं, लोग मिल करके करते हैं, और आज की परिस्थिति ऐसी है कि हम मिल करके इस तरह के बड़े आयोजन कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो जो जिसमें प्रत्येक व्यक्ति सहभागी हो सकता है, क्योंकि और होना भी चाहिए, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति इस पर्यावरण का उपभोग कर रहा है, हवा धूप पानी सब कुछ प्रकृति से ले रहा है, जीवन ले रहा है, उसका जीवन प्रकृति में बसता है। तो प्रकृति से चूंकि हम सब कुछ ग्रहण कर रहे हैं, तो प्रत्येक व्यक्ति को उसको फिर से स्वस्थ करने के लिए कुछ करना जरूरी है। मतलब हम ले रहे हैं तो हमें कुछ लौटाना भी है। इस तर्ज पर जो चीज बताई गई है वेदों में, जो हवन बताया गया है, यज्ञ बताया गया है, उसे हम अग्निहोत्र कहते हैं। ये अग्निहोत्र एक बहुत छोटी सी विधि है जिसको घर में किया जाता है, घर के लोग मिल करके करते हैं। इसमें किन्हीं पंडित पुरोहितों की जरूरत नहीं पड़ती है, स्वतंत्र रूप से हम ये काम कर सकते हैं, और बहुत थोड़ी सामग्री की इसमें आवश्यकता होती है। ये एक विशिष्ट आकार के पात्र में किया जाता है, उसे पिरामिड आकार का पात्र कहते हैं, जो यह है। ये पिरामिड आकार का तांबे के पात्र में इस अग्निहोत्र को किया जाता है, और इसमें गाय के गोबर के कंडे, उपले या छाना, जो कुछ भी हम कहते हैं उसका उपयोग किया जाता है। जैसे ये छाना है, कंडा है, हमारे तरफ कंडा कहा जाता है इसको। गाय के गोबर को हम प्लास्टिक की पन्नी या कपड़े पर इस तरह से थाप लेते हैं, ये कंडा तैयार होता है। इसके छोटे छोटे टुकड़े करके उस तांबे के पात्र में प्रज्वलित किया जाता है। प्रज्वलित करने के लिए गाय का घी या कपूर या गूगल का इस्तेमाल किया जाता है। और ये दूसरा नियम है अग्निहोत्र का। इसका तीसरा नियम यह है कि इसमें ये करने का इसका समय होता है सूर्य उदय और सूर्य अस्त। जैसे आज भोपाल में, मैं भोपाल से बोल रही हूँ, भोपाल में आज का समय है 6 बज के, शाम को 6 बज करके 59 मिनट, 5 बज करके 59 मिनट, 6 बज करके 59 मिनट। तो ठीक मुझे उसके 7-8 मिनट पहले इस पात्र में ये कंडे टुकड़े करके प्रज्वलित कर देने होंगे, तब जाकर के मैं सही समय पर आहुति दे पाऊंगी। तो 7-8 मिनट पहले, यानी 59 का टाइम है, तो मुझे 52 पर इसमें अग्नि प्रज्वलित करनी पड़ेगी, तब जाकर 59 तक अच्छी धधकती हुई अग्नि तैयार हो जाएगी। फिर अक्षत चावल, यानी बिना टूटे चावल और बूंद भर गाय का घी, इसको हम अपने हाथ की हथेली पर ले करके उसका मिश्रण कर लेंगे, मिला लेंगे आपस में, और फिर समय होने पर, सूर्यास्त का समय होने पर उसका पहला हिस्सा उठा करके उसमें आहुति देंगे मंत्र कह करके। मंत्र बहुत आसान से है। पहला मंत्र शाम का है अग्नये स्वाहा अग्नये इदं न मम
और आहुति दे देंगे स्वाहा पे। फिर हम दूसरा मंत्र कहेंगे, सूर्याय स्वाहा प्रजापतये स्वाहा प्रजापतये इदं नमः। ये दूसरा मंत्र है। सवेरे की इसमें पहला मंत्र सूर्याय स्वाहा है और दूसरा मंत्र प्रजापतये स्वाहा है। तो 2 आहुति सवेरे और 2 आहुति शाम को देनी होती है। ये आहुति जब हम समय पर देते हैं, आहुति देने में 25-30 सेकंड का समय लगता है और आहुति अग्नि में डालने के बाद वो पूरी तरह भस्म हो, इसमें 2 से 3 मिनट का समय लगता है। अग्निहोत्र संपन्न हो गया। इतना छोटी सी कृति है जो हर घर में आसानी से की जा सकती है। यह जो सामग्री है अग्निहोत्र की, ये गांव देहात में और शहरों में भी आज आसानी से उपलब्ध है, क्योंकि आज भारत में बहुत सारी जगह गायों पर बहुत अच्छा काम हो रहा है। तो गाय का घी और गाय के गोबर के कंडे उपलब्ध होना आज की तारीख में कठिन नहीं रहा है। तो थोड़ा सा घी, ये 50 ग्राम घी, इतनी एक छोटी सी शीशी घी की 1 महीना अग्निहोत्र करने के लिए पर्याप्त होती है। तो बहुत थोड़ी मात्रा में हमें घी की जरूरत है, थोड़ी मात्रा में गोबर की जरूरत है और बहुत थोड़ी मात्रा में चावल की जरूरत होती है। तो ये सारी चीजें जुटाना आसान है। घर का कोई भी एक सदस्य इसको अग्निहोत्र को करे, उसकी अनुपस्थिति में दूसरा व्यक्ति कर सकता है, उसकी अनुपस्थिति में तीसरा व्यक्ति कर सकता है। मतलब यह है कि घर में कोई भी जिसके पास समय हो सूर्योदय पर, जिसके पास समय हो सूर्यास्त पर, वो 5 मिनट का समय निकाल के इस अग्निहोत्र को करे। जब हम अग्निहोत्र करते हैं तो सूर्योदय पर जब हम अग्निहोत्र करेंगे तो उसका प्रभाव सूर्यास्त तक यानी 12 घंटे बना रहता है। सूर्यास्त पर जब हम अग्निहोत्र करेंगे तो उसका प्रभाव सूर्योदय तक बना रहेगा, यानी 24 घंटे घर का वातावरण अग्निहोत्र के प्रभाव से भरा रहता है। अग्निहोत्र का प्रभाव यह है कि इसमें से जो गैसेस निकलती हैं आहुति देने के बाद, वो गैसेस वातावरण को प्रभावित करती हैं, वातावरण को शुद्ध करती हैं और उसका परिणाम हम पर यह होता है कि हमारा जो तनाव है वो तनाव तत्काल दूर होता है, मन से हम सशक्त होते हैं और शरीर से भी स्वस्थ होते हैं। अगर शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है तो बहुत सारी हमारी जो समस्याएं हैं हम खुद ही हल कर सकते हैं। ये व्यक्तिगत हमें अग्निहोत्र का लाभ होता है और पर्यावरण की दृष्टि से अगर हम देखें तो ये अग्निहोत्र घर घर में होना चाहिए। वेदों में यही आदेश है कि ये अग्निहोत्र घर घर हो। अगर घर घर में अग्निहोत्र होता है तो ये जो पूरा जो मैं कह रही थी कि आज हमारे सामने ऊर्जा का ही संकट है, ऊर्जा का जो डिस्टर्बेंस है, कम और अधिक होना है, यही हमारे सामने बहुत सारी समस्याओं के रूप में खड़ा है। इसको संतुलित करने का ये सबसे बड़ा साधन है जो वेदों ने हमें दिया। वेदों में जो भी बताया है वो सारा विज्ञान है और आज की विज्ञान की कसौटी पर कसने के लिए हमेशा तैयार है। बहुत जितनी विज्ञान की आज की विधाएं हैं इन सब में अग्निहोत्र को परखा गया है। देखा गया है कि वास्तव में अग्निहोत्र करने से कमरे का वातावरण में बहुत सारा परिवर्तन आता है। बहुत सारे रोगाणु 16x16 के कमरे में एक समय जब हम अग्निहोत्र करते हैं तो 96% रोगाणु हानिकारक कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। बहुत सारा परिवर्तन वातावरण में आता है। हाँ, ये देखा गया है कि अग्निहोत्र करने के बाद हमारी जो मस्तिष्क की तरंग है गामा थीटा बीटा, इन पर भी बहुत अनुकूल परिणाम होता है। हमारे स्वास्थ्य पर उसका बहुत सारा अनुकूल परिणाम देखा गया है। बहुत सारी बीमारियां केवल अग्निहोत्र करने मात्र से दूर होती हैं। तो वातावरण का प्रभाव हमारे ऊपर होता है। प्रत्यक्ष अग्निहोत्र का हम पर परिणाम न होकर अग्निहोत्र का परिणाम पर्यावरण पर, और पर्यावरण में जो शुद्धि आई है, जो स्वास्थ्य आया है, उसका परिणाम हम पर होता है। तो पर्यावरण की जो आज हमारे सामने समस्याएं हैं जिसके लिए हमको सबको चिंतित होने की आवश्यकता है, उन और चिंता चल ही रही। तभी तो इस तरह के कार्यक्रम जैसे अभी आप यहाँ पे आयोजित किया गया है, इस तरह के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, इस पर चिंतन मनन चल रहा है। हम जैविक कृषि की ओर आ रहे हैं, हम गायों के संगोपन को ज्यादा महत्व दे रहे हैं, हम उस ओर कदम बढ़ा रहे हैं। इसमें हमें अग्निहोत्र बहुत ज्यादा सहायक होगा अगर हम इस अग्निहोत्र को अपने घर में शामिल करें, प्रत्येक व्यक्ति अग्निहोत्र के साथ जुड़े। तो
हाँ कहिए। हमारे समय के अभाव के कारण हम, हाँ, अभी हम लोगों को यहीं पे खत्म करना होगा। हम लोग वापस मिलेंगे और फिर से ये प्रोग्राम को और आगे की दिशा में लेके जाएंगे। अभी क्योंकि ये सिनेमा हॉल है और ये सिनेमा हॉल में अभी एक फिल्म शुरू होने वाली है, तो हम लोगों को ये जगह को वेकेट करना है। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद आपका समय के लिए, और हम लोग जुड़े रहेंगे आपके साथ, और आगे कैसे पूरे देश में काम को बढ़ाना है वो हम आपसे हाँ सलाह करेंगे। ठीक ठीक। धन्यवाद नलिनी जी, थैंक यू। अभी हम लोग एक छोटा सा एक अवार्ड्स है उनके लिए, ग्राम सदन के लिए। हेलो, हाँ अर्चना जी आइए, और अर्चना जी की टीम आइए। हम लोग छोटा सा एक आपको पौधा गिफ्ट करना चाहते हैं। ये जूट का बना हुआ है और ये पर्यावरण के लिए भी बहुत अच्छा है। थैंक यू, थैंक यू। Thank you for inviting us. We have to end it here now and see you tomorrow again, if possible. 9 a.m. to 12 noon. Tomorrow we will have a lot more sessions by Dr. Debashish Sen and a lot of other dignitaries. Thank you. Thank you.